Assalamu alaikum, bismillahir rahmanir rahim. First of all, I would like to say a big thank you to Allah subhanahu wa ta'ala who has given me an opportunity. देखिए, first and foremost thing, the moment I came here, what I told, I said, Allah subhanahu wa ta'ala का शुक्रगुजार हूँ. तो आप पहला अल्फाज आपके जहन में ये बिठाइए, any point in time, if you want to be successful, if you want to conquer this wonderful world, you've got to possess an attitude of gratitude. एक अल्फाज है gratitude, वो आप में होना चाहिए. आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे आया मैं बोला शुक्रगुजार, क्योंकि जब बंदा कोई चीज़ का शुक्रिया अदा करता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसको काफ़ी अहमियत देता है. समझ रहे हैं आप लोग? Am I correct? Okay. And second point is, देखिए, first and foremost thing I told about gratitude. Second word is, you should be a giver. Because one thing you understand in life, if you are a giver, जब आप देते हो किसी को तो आपके दर्जे काफ़ी बुलंद हो जाते हैं. You will be doing wonders. I'm talking truth because you take example of रमज़ान का महीना. देखिए वो एक पाक महीने में क्या होता है, हर गरीब से गरीब अमीर हो जाता है. क्योंकि उनके दिल में ये होता है कि हम किसी ना किसी की मदद करें. How many of you want to become the best person on the planet? Look, I'll tell you one thing. Everyone wants to become. Everyone wants to do wonders in life. The point is, they don't have proper goals. Now I will tell you what are those goals. You may be thinking, sir, I have a goal. But the goal which is in your mind is not a goal. The goal which is written on the paper, that is a goal. You tell me how. I'll give one basic example. Fair enough? How to set a goal. I'm honestly speaking, I'll talk about later, but I wrote 10 goals in the year 2005, and out of 10, 9 I achieved. I will continue this topic later on, but before that, I was emphasizing about the word goal setting. ठीक है, मैं आपको एक goal setting का example देता हूँ. Should I? Okay. Now look, I'm driving a car. I've got a, I'm going with a speed of 50 kilometers. I've drawn, maybe 30, 40 kilometers. All of a sudden, right I saw, there is an accident. So what I did, I stopped for a while. I helped the concerned person and got back to my car and again started driving. Now before that accident I saw, what was my speed? It was 50. Now after that, what will be my speed? 30, maximum 20, 35, that's all. Why? Because you have that scene in your mind. That, the accident what had happened is fresh in your mind. Got the point? Now after 20 minutes, 30 minutes, half an hour, again what will be your speed? Again you'll forget everything because it's okay, gone. Your speed is 50. This is one example. Now another example. Another example is, I'm driving same speed with 50. After 40, 50 kilometers I drove. Right side I saw there is an accident. But this time what I did is, I got down, I helped the concerned person, but I took a photograph of that accident. And I took that photo and kept in front of my car. Now tell me, what will be my speed until my journey? Because yes, you won't increase after 1 hour also. Because that, the accident what had happened, that's fresh in your mind. You're getting my point? That is goal setting. Because what we do, today your friend is with you, he say, look bro, today I've seen there is one IPS officer. I want to become IPS officer. Now after 1 week, one cricketer will come and you'll say, I've seen this Virat Kohli, I want to become Virat Kohli. Now after third time you've seen Nikhat Zareen, the girl will say, I want to be a boxer. I'm telling you. Now what happened here is, you're just looking out someone and you want to become someone. Goals are not set like that. You're understanding my point? How goals can be set? Goals will be set by your passion. Your passion should be there. वो कहते हैं ना जुनून, जुनून चाहिए. देखिए आप देख सकते हैं, the moment I come here, I forgot everything. Because I love talking, I love speaking, I want to give best of the best. That's passion, that's junoon. I'm not doing anything 99.99%. Have you noticed? आप notice करें मुझे? I'm 100% involved.
I'm talking, but I can see the last before two bench, two girls are talking to each other. I can see that. That's the observation. You understand? That means I'm talking, but I'm telling you this is what's happening. That is involvement. If you want to do something in life, you have to be passionate. You've got to involve yourself. You've got to be focus oriented. Say, look, nothing happens just like that. You might be saying, sir, we'll do smart work. No. Last time I remember A.K. Khan Sahab, he was saying about smart hard work. I love the word because nothing comes just like that. There is a proverb in English, hard work never goes unrewarded. That means when you work hard, definitely you're going to get results. But you've got to be smart enough. What is smartness? Smartness means whatever knowledge you're getting, you've got to observe. Now I'll give an example of how to keep your knowledge with yourself. And you've got to give back. Now what is that? Now, take an example of a glass of water. You have taken a glass of water, you kept in the freezer for 1 hour. What happens? Water converts into? Very nice. Ice. After half an hour, you got back same ice water and kept outside for half an hour. Now what happened? That ice water becomes water. Now this is one example. Now another example, you've got the milk, converted into curd. दूध जो था आप दही बना दिए, 1 घंटा रख दिया आप, 2 घंटे रख दिए, उसके बाद वही दही को क्या आप दूध बना सकते हो? अंडरस्टैंड, देयर इज अ मीनिंग. ये कहना चाह रहा हूं, जब आप तालीम हासिल करते हो तो उस तरह हासिल करिए आप. ऐसा नहीं यार फहीम सर आए बोले खुदा हाफिज. नो, whatever you've been taught, it has to get inside. Are you getting? ठीक है? This is one thing. Now why I'm giving these examples? Tell me, क्या मकसद है मेरा एग्जाम्पल देने का? कि आपको ये जहन में आना चाहिए. देखिए माशाल्लाह मैं आपको बताता हूं, ये जो डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, आई सैल्यूट, बिकॉज आपका जो डिसिप्लिन मैं देख सकता हूं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि क्लासेस चल रहे हैं, हर चीज हो रही है, फिर भी आप लोग ऑनेस्टली बैठे हो, सुन रहे हो. ये ऐसा सुन नहीं रहे हो कि भाई खाली आप बोल लो, हम ऐसा नहीं. मैं समझ सकता हूं इंग्लिश में 2 अल्फाज हैं, उसका मतलब एक ही होता है सुनना, बट यू आर लिसनिंग, यू आर नॉट हियरिंग. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अक्सर क्या होता है लोग, भाई अब फॉर एग्जाम्पल बाहर म्यूजिक चल रही, आप उसको हियर कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, चल रहे सुन लिया, हो गई बात. बट मैं आपको कुछ कह रहा हूं, उसको क्या कर रहे हो आप लोग? लिसन. दैट इज इंपॉर्टेंट. फेयर एनफ, यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट focus, I was talking about discipline, I was talking about few examples which you should never forget in your life. Yes, I want to crack UPSC, I want to be the best. It is possible. Now what is this called as? We use one word called as specific. How you can measure your goals? There is a one word, keep that in your mind. It starts with S, ends with T. I'll do the jumble so that you will never forget. S is very specific. As she said, I want to become an IAS officer. Now, to become an IAS officer, what she has to do? Work hard. Fair enough. Now, I'll tell you one thing. Everyone works hard. Honestly speaking, the fact is, you're sitting here, itself shows that you're working hard. But the point is, here, you want to work hard in a very systematic way. Now what is that? I'll give an example. For example, I've come all the way. Do you know where from I'm coming? Exactly. Thank you very much. From Hyderabad I'm coming. Now look, if instead of coming from this direction, if I would have gone that direction, where I would have ended up coming? Instead of going to Bidar, I would have gone to Warangal. You understand my point? Even though I'm doing action, but my direction is in wrong direction. So keep that in your mind. Most of the people, most of the students, most of the candidates, they love to do. Everyone loves the parents, everyone loves the teachers, everyone wants to have a great life. But the point is, they're not successful because their action is not in right direction. If your action is in right direction, that is key to success. समझ रहे हैं मेरी बात? आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करा तो आप बन जाएंगे. तो आपको यह समझना चाहिए कि आईएएस के लिए क्या बेसिक काम है. उसके लिए एक्शन ओरिएंटेड होना है.
is life. You are getting my point? Action should be in right direction. That is key to success. You got my point? Hope you're getting me. Yes? Okay. Now, I was talking about specific, I was talking about action. But what about T? T is what? It's simple, time. You have to have time management. Look, you have certain time. If you're saying that, this time, it's okay, I don't want to. No, time plays a crucial role. You ask a person who's got a flight at 5:30, and he reached the airport at 4:45, the authority will say that, I'm sorry, you're late. Ask that person when he missed the plane. Because of the time. Understand, ask the concern. You know athletics? Famous, athletes who run fast. Ask them, what is the difference between gold medalist and silver medalist and bronze medalist? There is a minute difference, hardly point seconds difference. But someone wins gold, someone wins silver. So understand the value of time. So luckily you're working, you're studying in such a prestigious institute. What you've got to do? They're not saying that you take out hill and climb on the mountain. They are just telling you, study and reach the pinnacle of the success. Now look, I'll tell you one thing. I'm giving this speech, okay? Now I have given maybe 10-15 minute speech. Among maybe 200 or whatever it may be, 190 students will say, Arey, Mr. Faheem has given speech, so we should say, one, thank you. Example, okay? But I say, look, I need a glass of water. What you will do? You will get me or not? You will get me glass of water for me, because you say, this guy has given speech and we learned something, so we want to give back a glass of water to him. Now imagine I am an unknown person to you and asking you something, and you are giving to me because you have the gratitude. Now imagine about your parents who has given life to you. What you have to do? You've got to give so much to them. Because understand the value of parents. Because I know the value of parents. Why I'm saying all these things, understand this is the need of an hour. This age won't come back. What we do, we either live in past or we live in the future. We don't live in the present. What we say, अरे भाई मैं जब डॉक्टर बनूंगा, जब मेरे माँ को मैं हेल्प करूंगा, या मैं जब IAS ऑफिसर बनूंगी, जब मेरी माँ को हेल्प करूंगी. No, you have to help right now. आप कहेंगे भाई हेल्प कैसा करें यार? हेल्प सिर्फ उनको एक मुस्कुरा के बात कर दीजिए. हेल्प वही जो वो कह रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए. देखिए माँ बाप की अहमियत मैं आपको इसलिए बता रहा हूं. मैं आपको पहला अल्फाज क्या बताया था? ग्रैटिट्यूड. सेकंड गिवर. ये जहन में रखिए आप लोग. मैं आपको फिर क्या बताया? मैं आपको, आप स्पेसिफिक रहिए गोल्स में. जैसा शी टोल्ड मी, वेरी नाइस. एक कोई बहन ये कहे कि मुझे IAS बनना है, दैट्स वेरी नाइस. स्पेसिफिक रहिए गोल्स. और अपना एक्शन कैसा रहना चाहिए? एग्जैक्टली, एक्शन शुड बी इन राइट डायरेक्शन. गॉट इट? और टी क्या है? टाइम मैनेजमेंट. होप यू आर गेटिंग मी. शुड आई कंटिन्यू? आवाज ही नहीं आ रही भाई. शुड आई? ब्रिलियंट, साउंड्स गुड. ओके, अभी मुझे भी एंथुसियाज्म आएगा भाई, मुझे भी एनर्जी आएगी. ओके, नाउ दिस इज वन पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट आई विल टेल यू. In this entire world, there are only two things. Only two things. One is results. Second is excuses. That's all. दो ही चीज होते हैं जिंदगी में. मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी तजुर्बे से बता रहा हूं. मैं आपको बताऊंगा मेरा तजुर्बा. एक क्योंकि देखिए, अगर मुझे यहां पे आना है तो मैं आ चुका हूं. ये रिजल्ट्स है. अगर मुझे नहीं आना है तो मैं कॉल करूंगा, सर बहुत पानी पड़ रहा है, तूफानी बारिश है, मैं नहीं आ सकता. आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसी तरह अगर आपको एग्जाम में पास करना है, डिस्टिंक्शन लाना है, और तो आपको सिर्फ आप वो करना है. कोई एक्सक्यूज नहीं. लाइट नहीं थी, टीचर नहीं थे, पढ़ी सही नहीं, ये नहीं, नो एक्सक्यूज. पढ़ने वाला सिर्फ दो होते हैं. आई एम गेटिंग, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. और एक मैं आपको एक अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं. यू हर्ड ऑफ पिकासो? पिकासो पता है? एक आर्टिस्ट है. मैं आपको बताता हूं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का फर्क. एक बार क्या करते हैं पिकासो, ही इज गॉट हिज एग्जिबिशन समवेयर. So what he does is he started his car, he wants to go. All of a sudden there is a rain, पानी पड़ रहा है. He stops somewhere
and says that, yaar pani pad raha hai, I'll stop somewhere and after some time I'll head. Then meanwhile he thought, this is my location, I'll just knock one door and I will sit somewhere, maybe have cup of coffee, then I will go. Then what happened, this guy came, knocked the door, one lady came, she said, oh, Picasso, please come. He came, he sat over. Then the lady asked, Picasso, how can I help? Picasso told, because it's raining, I'm sorry. I just want to sit for some time, then I want to go back. Oh, no problem. Then she offered a cup of coffee. Picasso drank, he said, thank you. But Picasso, what he did is, gratitude. He has the gratitude. What he said is, I want to do something to you. He said, what? Get me a piece of paper and pen. Lady was, okay. She got the piece of paper, pen. Picasso, in 30 seconds, he draws something and give back to the lady. Lady was happy, but deep inside she was thinking, यार ये बंदा करोड़पति इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक में कुछ पेपर दे दिया कुछ ड्रॉ करके. तो Picasso समझ चुका था. Picasso told, look lady, the gift what I have given, this is not an ordinary gift. This cost 1 million. Lady got shocked. She said, यार 30 seconds make someone can give like that. He just draw and get back. Picasso told, look lady, if you don't trust me, tomorrow there is an exhibition at that place. Please come and watch the importance of this paper. Then lady said, okay. Tomorrow she went there. When she just entered in the exhibition, on the wall, it was mentioned, the same picture what he draw, sold for 1 million. You got the point? Then lady got shocked. Lady said, Picasso, in 30 seconds you have given 10 lakh. That means America mein 1 million, yeah, 10. 1 million. Picasso told, miss, you might be thinking this I have done for 30 seconds, but to learn this art, I have invested my 5 years. You got my point? समझ रहे हैं आप मेरी बात? That means कहने का मतलब ये है, AK खान साहब की सपोर्ट के बाद मैं बात कर रहा हूँ. समझ रहे हैं आप मेरी बात? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, यानी कि 5 साल मेहनत करने के बाद वो इतने स्मार्ट हुए कि कुछ करे तो हो जाए. तो वैसा आपका करियर है. आप ये मत सोचिए आज एक दिन में बस पूरा आपको आईएएस बन जाएंगे. नो, इट्स नॉट इजी. एवरीथिंग टेक्स टाइम. जब कुछ पसीना निकलता है तो उसके आपको कुछ हासिल होता है. यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यू हैव टू वर्क हार्ड. दिस वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटिफुल, बट उसको आप किस तरह लोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ आई विल गिव यू वन मोर गुड एग्जांपल. How many of you believe communication is very vital? बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने समझ सकते हैं कम्युनिकेशन? ऐसा नो, इट्स अ फैक्ट. मैं आपको एग्जांपल देता हूं कम्युनिकेशन का. एक सेंटेंस ले लीजिए आप. सेंटेंस, कम्युनिकेशन, आपकी जबान, आपके अल्फाज की क्या अहमियत है मैं बता रहा हूं आपको. एक सेंटेंस देखिए आप. लिव हिम नॉट, कॉमा, किल हिम. क्या मतलब है? लिव हिम नॉट, मत छोड़ो, मार दो. करेक्ट? लिव हिम नॉट, कॉमा, किल हिम. अब देखिए आप सेंटेंस, लिव हिम, कॉमा, नॉट किल हिम. क्या हो गया? यू गॉट माई पॉइंट? एक कॉमा से क्या हो गया यहां? एक कॉमा से किसी की जान गई, किसी की जान बच गई. दैट इज कम्युनिकेशन. आपको मैं वो गहराई से बता रहा हूं. आप लोग समझते होंगे कुछ भी बोले चलता. नो, योर वर्ड्स गॉट्स पावर. आपके जबान में, आपके अल्फाज में बहुत पावर है. समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? बट अल्लाह का एहसान है, मैं जब रात में सोता हूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है कि हाँ यार मैं फहीम तो अपने माँ बाप की बात नहीं सुना. ऐसा नहीं है. अल्लाह का एहसान है. मैं हर वो जो चीज मैं जो कर सकता था मैं किया. कहने का मतलब है वो है माँ बाप की अहमियत. आप समझिए, क्योंकि मैं इससे पहले आपको बोला वी आर लिविंग इन पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट. हम क्या करते हैं, बुरा मत मानिए, किसी का इंतकाल हुआ तो गए, रोए पूरा रो देते. अरे भाई जब जिंदा है मदद करो ना आप. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ये जहन में रखिए आप लोग. माँ है, माँ के जाइए, आप जाके हेल्प करिए, एक गिलास पानी पिलाइए, उनके पाँव दबाइए, कुछ खाना खिलाइए. कहने का मतलब है ये दुनिया आपको पता है, इतनी प्यारी दुनिया है. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप प्यारे हो तो, अगर आपके दिल में कुछ है तो सब बुरे दिखेंगे. इफ आई एम नॉट गुड, आई से क्या किस तरह बैठे यार लड़का. अगर मैं अच्छा हूं, इट्स ओके, चलता है, मैं भी आपके वैसी था.
तो ये जहन में रखिए, ठीक है। एक इंग्लिश में आपको एक अच्छी मैं प्रोवर्ब बताता हूं। निखत जरीन को पहचानते हैं, सानिया मिर्जा को, और एक रिसेंटली कोई डॉक्टर रोशन जहां जो है एक स्पीक, आई वॉज ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड बिकॉज माशाल्लाह मैं भी सुना उनके स्पीच, बहुत अच्छा दिखा। कहने का मतलब है मैं उनके नाम लिया, क्यों लिया मैं आपको बताता हूं। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, सक्सेस हैज मेनी अंकल्स, फेल्यूर इज एन ऑर्फन चाइल्ड। समझ रहे हैं आप? जो सक्सेसफुल है हर आदमी उसका नाम लेगा, जो अनसक्सेसफुल है कोई उसका नाम नहीं लेगा। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आपके फैमिली में अनफॉर्चुनेटली कोई अनसक्सेसफुल है, अपना कजन भी है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई दूर का कजन है भाई। और निखत जरीन जो कजन भी नहीं है, एक अपनी कौम की बंदी है, उसको बोल रहे हैं हाँ अपनी हैदराबाद के भाई, निजामाबाद के भाई, अपनी बच्ची है। you're getting my point. This is the world. So success has many uncles, failure is an orphan child. Keep this thing in your mind. Hope you're getting me. Hope this speech what I'm delivering doing value for your time. आवाज नहीं आ रही भाई, माशाल्लाह। ओके, दैट गिव्स मी एनर्जी। ओके, नाउ मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल, और एक देता हूं मैं आपको। देखिए, सिर्फ दो चीजें होते हैं दुनिया में, मैं आपको बताया। एक हो गया रिजल्ट्स, दूसरा हो गया एक्सक्यूजेस, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज है, आई मीन इंग्लिश में उसको मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखिए, पर्सनालिटी को किस तरह आप उभार सकते हो। देखिए, मैं यहां पे ठहरा हूं, फहीम knows who फहीम is. फहीम को अलावा किसी और को पता ही नहीं कि फहीम में क्या खूबियां और खामियां हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्यों बता रहा हूं आपको? एक अल्फाज है, वो ऐसे स्टार्ट होता है, अपने आप के पहले स्ट्रेंथ्स पैदा करिए। आप लोग किस में स्ट्रेंथ्स रखते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। यू अंडरस्टैंडिंग? स्ट्रेंथ्स। सेकंड क्या है बोलिए आप सक्सेस होने के लिए? स्ट्रेंथ्स तो मालूम कर लिया आप, बट उसके अगेंस्ट क्या है? एग्जैक्टली आपको अपने वीकनेस रिड्यूस करना है। भाई स्ट्रेंथ तो बहुत है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, आई लव टू स्पीच, आई लव टू, बात करते जा रहा हूं, रात के 12 बजे भी मैं कोई भी नहीं है बात कर रहा हूं, तो फायदा है वो। तो अपने वीकनेस को भी रिड्यूस करना है। SW और O से क्या होता है? ब्रिलियंट, माशाल्लाह। ओके, अपॉर्चुनिटीज ध्यान में रखिए आप लोग, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। चलता है एटीट्यूड, ठीक है भाई, इन्हों आए समझाए चले गए। नो, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीवन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। आप अपने आप ये मत सोचिए कि यार वो मैं उनके वैसा कॉपी कर सकते, नहीं कर सकते। आपके वैसे कोई और बन ही नहीं सकते। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद वसीउद्दीन के वैसा मैं बन ही नहीं सकता, ना आप मेरे वैसे बन सकते हैं। सिर्फ आप अपनी खूबियों को बढ़ा सकते हो, खामियों को रिड्यूस कर सकते हो, आपके जो अपॉर्चुनिटीज है उसको तलाश कर सकते हो। ये जहन में रखिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और क्या होता है, T से थ्रेट होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, और कॉन्फिडेंस में जाते हैं। मैं फर्स्ट क्लास IAS बन जाता हूँ, IPS बन जाऊँ, IFS इंजीनियर, मैं एक स्पोर्ट्समैन, बिजनेसवुमैन, हर चीज। नो, अपने आप को जांच के उसको इम्प्रोवाइज करिए। व्हाट इज दैट? SWOT समझ गए आप लोग? Look, most of us, what we think is, I can come, I can talk. That is itself is a great thing. Yeah, you know, public speaking, in America, there is a ranking. People ask, if you die, you feel very scared, or if you come on the stage and talk, then that person told, I will rather die, but I won't come on the stage and speak. वो होता है public speaking. You understanding my point? तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि पब्लिक स्पीकर ही बनिए आप। यू हैव ए वाइड ऑप्शन। अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज दी है। पहले मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू, वी डोंट हैव सो मच इंटरनेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मे बी 15 rupees per hour, like that was the time I'm saying. Now it's not like that. Maybe $200 you pay, entire month you will get. So this is an opportunity. You have to encash this in a positive way. Most of us, what we think, इंटरनेट बुरी चीज है। देखिए, उसमें आप पॉजिटिविटी लीजिए। कौन IAS कब बने, कैसा बने, मैं कैसा बन सकता हूं, IPS बनना है या इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है या बिजनेसवुमैन बनना है या स्पोर्ट्समैन बनना है, जो भी आपको बनना है, आप पॉजिटिविटी लीजिए।
हम वो नहीं करते। अक्सर क्या करते हैं, टाइम अरे चलता है। नो, आज से आप लोग ये अहद करिए, मैं आपको जो बातें बताया हूं उसको जहन में रखिए। नो, व्हाट इज दैट? इसमें एक 3 चीज होते हैं। पहला, यू हैव टू हैव योर गोल्स वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली। देखिए मैं आपको बताता हूं, 2005 में मैं आपको बताया, आई हैव रिटन 10 गोल्स, आउट ऑफ दैट 9 आई अचीव्ड। ठीक है, वो कैसा हुआ मैं आपको बताता हूं। In the year 2015, I guess, one of my cousin came from London and he said, Faheem bhai, you know, you've written certain goals. How many of them you achieved? I don't know which goals you're talking about. Then he gave that paper to me, which I wrote in the year 2005. Then I was shocked. In that, there was one goal to have lunch in London and dinner in New York. Alhamdulillah, I did that. You know, thank you so much. So why I'm saying is, this is what the importance of writing goals. Because I remember, that's what, today onwards, what you do, have some short-term goals. Short-term goals. Have some mid-term goals. Okay? Have some long-term goals. No, long-term goals, as she said, I want to become an IAS officer. Fair enough. That's your long-term goal. Now, how to go, when to go, where to go, whom to talk, all these things you've got to have your questionnaire. Now, what is that questionnaire? Questionnaire, how you can raise account. You have to introspect yourself. आप अपने आप को जांचिए. As I said, your strengths, you know better than me. I can come motivate you, I can do everything for you. But ultimately, if you have to achieve, you have to, if you want to eat, you have to achieve and take it. You got the point. I can at least give only this thing in your maximum on the mouth, not more than that. Rest you have to do. Similarly, your teachers, what they are giving you knowledge, they will give. But it's your prime duty. You have to convert it. You have to execute it. Now, you will execute, but how you have to execute? That too in a right direction. Whatever your teacher told, whatever your professor are teaching you, for that you have to. Fair enough? Now what I want is, मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, आप वो जहन में रखिए. First and foremost thing, your communication is important. देखिए communication क्या होती है मैं आपको बताता हूं. Communication का मतलब नहीं सिर्फ बातें करो 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 करो. Communication 3 किस्म के होते हैं. You're getting my point? How many? 3 किस्म के होते हैं. तो आपको क्या करना है? पहली कम्युनिकेशन क्या है मैं आपको बताता हूं. क्या है बोलिए आप? आपकी बॉडी लैंग्वेज. देखिए ओरल रिटर्न तो चलेगा, ओरल रिटर्न तो ये भी कम्युनिकेशन होता है, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी क्रूशियल रोल अदा करती है. किस तरह आप बैठ रहे हैं, किस तरह बातें कर रहे हैं, किस तरह समझा रहे हैं. दिस ऑल थिंग्स आर सो इंपॉर्टेंट. ये कनेक्शन किस में जाता है पता है आपको? तरबियत पे जाता है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. इसके कनेक्शन क्या है? तरबियत. इसके कनेक्शन क्या है? आपके एटिकेट्स, आपके मैनरिज्म, आपके हर वो चीज, ये कनेक्शन से. अक्सर हम क्या करते हैं, डोंट माइंड, आजकल आप देख सकते हैं, बुरा मत मानिए, बच्चा अगर कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है तो बच्चा ये समझेगा मैं पूरी दुनिया जीत लिया, मेरे माँ बाप के सामने आएगा, माँ बाप डरेंगे. इन द सेंस डोंट माइंड, अरे क्योंकि उनको उतना इल्म नहीं है और बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ लिया तो वो बोलेगा मैं दुनिया फतेह कर लिया. हमको वैसे नहीं करना है. तालीम हासिल करिए आप, बट तरबियत भी अच्छी करिए. ये जहन में रखिए, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ. आप नहीं समझ सकते. आपको लगेगा अरे यार ये क्या है, ये ऐसे स्पीचेस दे रहे हैं. आई एम टॉकिंग ट्रुथ बिकॉज आई हैव सीन लाइफ अहेड ऑफ यू. मैं आपसे ज्यादा जिंदगी जी चुका हूं, मुझे पता है. क्योंकि अक्सर मैं आपको जो एग्जाम्पल दिया, होने के बाद अफसोस करते, वो मत करिए. आज से अहद करिए आप लोग, क्योंकि ये जो दुनिया जी रहे हो ना आप, इसको अच्छाई से भी जी सकते हो, तकलीफ से भी जी सकते हो. आप अच्छाई से कैसा जीते? जब आपका दिल साफ होता है. दिल साफ कैसा होता है? जब आप गिवर बनते हो. आप एग्जाम्पल देखिए, आप किसी गरीब की मदद करिए, आपका दिल एक आप लड़के हैं तो आप बोलेंगे मैं अपने आप का एक राजा हूं यार, शहजादा हूं. अगर लड़की किसी की मदद करती है तो कहेंगे यार मैं तो शहजादी हूं. मैं इसलिए बता रहा हूं, वो कुदरती निजाम है. जब आप किसी की मदद करोगे, मदद का मतलब ये नहीं है कि पैसे की मदद. मदद हर किस्म से होती है. यानी कि जो आपको मिल रहा है वो आपको लेना है और आप सबको बांटना है. ठीक है?
Getting my point? Okay. Now I'll just tell you about myself. How I've come to this stage, I will tell you. Look, when I was a student, I got a dream. कि भाई ड्रीम ये था कि मैं काफ़ी फिरूं, अच्छे से अच्छी कंपनीज में ज्वाइन करूं, अच्छे से अच्छे वांट टू बी ए बिग बिजनेसमैन, हर चीज़ एक सोच थी. मैं आपको बताता हूं 2002 से 2017 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ट्रैवल किया. मैं आपको बताया, हर प्लेन में बैठा मैं, हर होटल में एकोमोडेशन मुझे मिला, हर बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस कैब कार सर्विसेज मुझे मिली, क्योंकि मैं कंपनीज को काम करता था. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. 2018 में कोई रीज़न से मुझे वो काम नहीं करना पड़ा, कोई रीज़न से मैं छोड़ दिया समझिए. तो 2019 के टाइम मैं एक फेलियर से बाउंस बैक हुआ. आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि जो बंदा पूरी दुनिया फिर चुका है, 2019 में एक ऐसा स्टेज था कि मुझे वापस बाउंस बैक करना है. मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे. एक ये कि मैं गिव अप कर दूं और जैसा हुआ चलना, नो. दूसरा, नहीं, मैं दुनिया को आगे जाऊं, मदद करूं दुनिया की, और डेफिनेटली नाम कमाना है. तो मैं आपको बताता हूं, जब मैं ये प्रोफेशन चुना कि भाई लेट्स बी ए मोटिवेशनल स्पीकर, लेट्स स्टार्ट गिविंग समथिंग टू द पीपल. नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन टेल यू वन थिंग. इसमें आपको मैं बताता हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बट मैं जो अल्फाज किसी को देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो जो इज्जत मिलती है ना, बहुत बड़ी होती है. वो जो दुआ मिलती है ना, वो बहुत बड़ी होती है. ये जहन में रखिए आप लोग ये समझ रहे होंगे भाई आए हम शाहीन में पढ़ लिए, जो भी है भाई, ऐसा नहीं. याद रखिए आप लोग, हर वो चीज़ का हिसाब है. आप लोग यहाँ बैठे हो, अगर मैं यहाँ आकर एक अल्फाज यानी कि एक सेकंड भी मैं ज़ाया करता हूँ, तो मैं अल्लाह के पास इसका आंसरेबल हूँ. तो आप लोग ये समझिए जहन में कि आप लोग पढ़ने आ रहे हो, इतना अच्छा डिस्टिंक्शन लाना है आपको. क्योंकि आप ये मत सोचिए अरे भाई हम मैं ठीक है मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बन गई. नहीं, आप एक आईएएस बनने से आप पूरी कौम को बदला सकते हो, पूरी हिंदुस्तान को बदला सकते हो. आप याद रखिए, एक आदमी चेंज कर सकता है. अक्सर हम क्या करते हैं, अकेले से क्या होगा, नो, वन पर्सन कैन ट्रांसफॉर्म. अब देखिए आप खदीर साहब है ना, बोलिए आप, डॉक्टर्स की फैक्ट्री है बोल सकते बिदर में, यस और नो? दैट इज द ग्रेटनेस. अब इंशाल्लाह ताला आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, डिफरेंट स्ट्रीम के लोग आने वाले हैं. तो कहने का मतलब है, एक आदमी की सोच पूरी दुनिया को बदला सकती है. तो माशाल्लाह आप लोग तो 200-250 लोग यहाँ हॉल में बैठे हुए हैं. अगर आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हो. तो आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आज से आपको ये अहद करना है, हमको आगे कैसा बढ़ना है. देखिए हम क्या करते हैं, हर चीज, बुरा मत मानिए, ग्रांटेड लेते हैं. ग्रांटेड कोई चीज का हिसाब किताब नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है. हमसे सब होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा. टाइम मैनेजमेंट, देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको. मेरे पास 24 घंटे हैं. बिल गेट्स के पास कितने घंटे हैं? वो कितना कमा रहा है, करोड़ों अरबों. हम क्या कमा रहे हैं, लाखों. मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का एहसान मांग रहा हूं. बट यहां पे सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं. हमारे भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, बट वहां सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. जो बंदा आईएएस में फर्स्ट रैंक आता है और जो बंदा आईएएस में 100+ रैंक आता है, क्या फर्क है? सिर्फ सिस्टम. क्वेश्चंस तो सेम रहेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चंस तो सेम रहेंगे. तो मैं ये कह रहा हूं आपको, सिस्टम फॉलो करिए. सिस्टम इज एवरीथिंग. आप देख सकते हैं, एक सिस्टम, एक बटन आप ऑन करिए, दुनिया दूसरी चीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वहां सिस्टम बनाया गया है. तो आपको आज से यह हद करना है कि हमको आगे किस तरह बनना है. आगे ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर बनना है, भाई बस डॉक्टर बन गई, नो. जैसा डॉक्टर जहां जो कहना, वो क्या बताएं, 5.5 साल में सफर करने के बाद मुझे वो हासिल मिला है. देखिए लोग समझते हैं भाई स्मार्ट काम करो हो जाएगा, नो. मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, रातों रात जो अमीर बनते हैं, रातों रात वापस आ जाते हैं. मैं आपको बता रहा हूं, मेहनत का फल मिलता है, मेहनत का फल मिलता है. तो ये अहद करिए आप लोग. मैं जो भी बता रहा हूं आपको, ये मेरा मकसद क्या है, जो मेरा तजुर्बा है वो आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको कोई आगे तकलीफ ना हो.
जो हम गलती करें, हम भी यूपीएससी, हम भी सिविल का एग्जाम्स लिखे, बट वो टाइम पे कुछ और था। इन द सेंस हमारे पास 4-5 दिमाग में चल रहा था, अरे यार बिजनेसमैन बन जाए, अरे क्यों गवर्नमेंट जॉब भाई, अरे कुछ मैं बाहर चले जाऊं, अरे अमेरिका चले जाऊं, यहाँ ये 4-5 जो आपके गोल्स रहते हैं ना, वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम लाते हैं। आप उसको ओवरकम कैसा करोगे, बोलिए आप कैसा करोगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक कार है, मे बी आपके पास नैनो कार है, आप नैनो जा रहे हो, नैनो, और आपका खास दोस्त है आपके साथ बैठा हुआ है, ठीक है। एक 10-15 किलोमीटर जाने के बाद नैनो कार खराब हो गई, तो आप क्या करोगे जी? इमीडिएटली आपके दोस्त हो या सहेली हो, उससे पूछोगे नहीं पूछोगे? ऐसा नो भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्या करें? अब ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, आपके पास BMW है, आपके पास BMW है, आप जा रहे हो, 10-15 किलोमीटर के बाद कार खराब हो गई, आपके बाजू का आपका फ्रेंड है, क्या आप उससे सजेशन लेंगे? एग्जैक्टली नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, जब नैनो मीन्स चलता है बोल रहे हैं, BMW बोल तो आप सोच रहे हैं। जब एक कार के लिए आप इतना सोच सकते हो, तो आपकी जिंदगी के बारे में कितना नहीं सोचना है आपको? सोचिए, आपकी जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं है, आप समझिए वो, यू आर यूनिक, यू आर द बेस्ट ऑन दिस प्लैनेट। हम वो नहीं समझते हैं। मैं आपको एक बार आपको बुलाया, एक सेकंड आइए भाई, ये हीरो को बुलाकर बोला, माई आइए, आप भाई, आप मेरे बहुत हाथ मिलाइए, बहुत प्यारे भाई हैं, ये आपका अंगूठा है, ठीक है, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, क्या आप ये अंगूठा दोगे मुझे? 10 करोड़? नो सर। थैंक यू। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, एक अंगूठा में नहीं बोल रहे हैं, नो। समझो आप मेरी बात, बुरा मत मानिए। अगर फिलहाल अगर मैं आपको बगैर उसके एक बोला, भाई मैं आपको फ्री 1 लाख रुपए दे रहा हूं, आप ले लेंगे क्योंकि आपको जरूरत है। बट 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, अंगूठा नहीं देंगे आप, ऐसा नो। वो अहमियत है, समझिए आप अपनी अहमियत। रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बोला, मैं भाई तेरे को 1000 करोड़ दे दूंगा, तेरा पाँव दो, क्या देगा वो? समझिए आप, आपकी आंख, आपके अल्लाह सुब्हान तआला आपको इतनी नेमतों से सरफराज किया है, आपको करना क्या है? ये जो स्पीचेस मैं आपको बता रहा हूं, इससे रेवोल्यूशन आना है आपको। आप ही नहीं, पूरी कौम, पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया चेंज होना है। एक बेहतरीन डॉक्टर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, एक बेहतरीन आईएएस ऑफिसर पूरे इंडिया के कोर्स को चेंज कर सकता है। तो ये जहन में रखिए आप लोग, आज से आप यह हद करना है, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। फॉर दैट व्हाट you've got to do, you've got to follow one word, very strict word. What is that? It starts with D, ends with E. Brilliant. Discipline. MashaAllah. Discipline is so important in life. Without discipline, nothing happens. You understand? If you want to offer prayers, fajr, and get the maximum happiness on your face, you've got to wake up, you've got to offer salah. Then only you will be getting that. If you're sleeping on the bed, do you think you will get that? Not possible. Discipline is that. Discipline is to come all the way from different state to different state and talk. Discipline is that. Not sitting, not having good time in my house. No. Discipline is to get some pain for the future gain. That is discipline. समझिए आप लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क से नहीं भाई हम स्मार्ट काम, नो. You have to. When you get a pain for a short term, your future is bright. To go to America, at least you've got to take a flight. You've got to do a lot of efforts. At least to go to airport, you have to wake up from your bed, take a cab, go to airport. So that efforts are needed. All these things are so crucial. Now what you have to do, whatever you're listening, don't please pass from this ear, Make it like a curd. Keep it with you. Learn. Give it back to the society. Give back to your country. Then I'm telling you, we can do wonders. Mark my words. Because discipline is everything. Okay, one more guess. One word starts with C, ends with Y. Can you? Oh yeah? Brilliant. Give a round of appreciation for her. Very nice.
Now, why consistency plays a role? Look, to stand here and talk like that, do you think I've just learned yesterday and coming and giving lecture? I've given a lot of lectures. Then that confidence comes. That means consistency is the mother of invention. If you want to invent something, you've got to consistently do that. Do you think Picasso is just within a second he draw and get back to that lady? No. Consistently he worked hard to get that rank. Similarly, the girls, boys who are here, if you're doing consistently hard work, then only you're going to get good marks. Don't think that someone just got by fluke. No. A person who scored first rank, he or she deserves, because they have given out their time, they have given out their system. Understand, these all things, whatever I'm speaking, it makes a huge impact. How? If you take it in a positive way. Not just, अरे यार बोले चलो खुदा हाफिज़. No. Okay? You're getting? Okay. मैं आपको अपने बारे में बता रहा था. So out of 10, 9 points I achieved. Now what happened one day, because of some reasons, I've just lost the, the charm in my daily routine. Then I came back to house and I was thinking what to do, what not to do. There was options. There were two options. One was to be a good public speaker, otherwise go back to America. So what I decided, I just introspected myself. What I did? Introspected myself that what I'm good at. I was passionate. I was very passionate to talk, to convey my messages. So what I chose let's be a speaker. Let's give knowledge to the society, give to the community, give to the world. Then alhamdulillah, touch wood, I can say, I'm very happy today. Why I'm saying this thing is, in life you've got to have three things. Now, first thing, this is my passion to talk. Fair enough? Now, behind passion, there is a word you should always have. What is that? There should be a purpose in your life. If you only have passion, no point. Passion and purpose is correlated. Okay? Now both are okay. You are having passion, you are having purpose, but third thing, if you're not having, you're not going to be successful in life. Now what is that? You have seen so many celebrities who have done best of the best in their career, but after some time, they're again on the roads. Yes or no? Why? Because what happens is, I'll give you an example. For example, I'm talking. I'm giving best of the best speech. Definitely what happens? After giving this speech, if I go to an hotel and sat there and said that, look, I had best of the best speech at Shaheen Groups. There were wonderful audience. They really inspired my speech. So, please, I want to have dinner here, but I don't want to pay you. Will that hotelier accept me? Bhai, aap honge kuch bhi, pehle paise do. You're getting my point. Now, why I'm saying this example is, passion, purpose should be aligned with a word called profit. Then only you're going to be successful. So you have to choose your career connected to three things. Passion, today your brother will be playing football, tomorrow you will be playing football. Day after he will be playing cricket, you will be playing cricket. No. Passion, what's your purpose, and what's your profit? If these three things align, then you're going to be successful. Got it? Hope you're getting me? But I just want to tell you, whatever I have spoken, जो मैं आपको बताया हूँ, वो अच्छी तरह आप ज़हन में रखिए and try to execute that. There are a lot of certain points are there, but you've got to rush at 4 o'clock. Anyway, hope you loved the session. Hope you liked it. Inshallah ta'ala, you will pray for me to come next time and give this speech. Okay, by this I just want to say big thank you. Thank you, wonderful audience. Thank you, wonderful students. Thank you, Shaheen Group. Thank you, Khadir Bhai. Thank you, bhai.